Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will continue our chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants. And the topic is development of fruit. First, what is a fruit? Students, a true fruit is formed as a result of cell division, expansion and differentiation in the ovary. The ovary is turned into fruit as a result of stimuli. Firstly, it receives a stimuli from pollination, means pollination occurs. After pollinations, pollens are transferred to the stigma, and from the stigma they move towards the ovary up to the ovules and help in the developing of seeds. After receiving the necessary stimuli, the ovules present inside the ovary are transformed into the seeds, and the wall of the ovary is transferred into the pericarp, and the wall of the ovary is transformed into the pericarp. Ovary is transformed into the fruit, and ovules are transformed into the seeds, Students, the growth of fruit is generally very fast. And we can say, for example, an ovary of pumpkin grows 20 times in just 2 weeks. 20 times in just 2 weeks. Students, it is very difficult to define a fruit in common language. We can say that fruit may be defined as edible part of the entire gynoecium, or we can say it is juicy, fleshy or colored part. Juicy, fleshy or colored, that is eaten. Next, some of the botanists have divided the fruit into two parts. One are true fruits and second is the false fruits. What are true fruits? The true fruits are the fruits that are developed from the ovary of a flower and is not associated with the carpillary parts For example, brinjal and tomato. Second is the false fruit, the fruit that is developed from the ovary along with the carpillary part. For example, apple and fig. Now students, question come here. Why apple is called a false fruit? You can write that it developed from the ovary of the flower along with the carpillary part. That is why apple is known as the false fruit. Similarly, brinjal and tomato, true fruit. You can write the answer that it is not associated with the carpillary part, but it is developed from the ovary. Next, formation of fruit requires the following processes. First is role of pollination in fruit development. What is the role of pollination in fruit development? Students, pollination is an important process for fertilization, seed development, growth of ovary and prevention of ovary from dropping. After pollination, the pollen grains release the wall-held proteins and other components. This we have discussed earlier. By this process, the recognition factors from the pollen and stigma come close to each other. As soon as the pollen recognition is established, the growth in the ovary shows changes. Now, the pollen grains release some specific hormones, which together with the auxins of carpillary origin stimulates the growth of the ovary. This helps in the development of fruit. Role of pollination. Students, here you have write all the pollination processes that we have discussed earlier in the topic under pollination. Second is role of seeds in fruit development. What is the role of seeds in fruit development? Developing seeds play a significant role in the development of the fruit. It has been observed that a young apple with seeds on the all sides develops normal shape. If अगर एक ही साइड पे सारे सीड्स होंगे तो फ्रूट है जो उसकी शेप प्रॉपर नहीं बनेगी. क्यों? Because it was investigated that the seeds release some hormones. सीड्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. The hormones are auxins,
gibberellins and cytokinins, which help in the normal development of the fruit. Second is development of parthenocarpic fruits. Students, you know very well about the parthenocarpic process, the process in which a fruit or a young one develops from unfertilized egg. Some plants are able to produce fruits without fertilization. Such plants are known as parthenocarpic plants, and the fruits are known as the parthenocarpic fruits. They are seedless or they are empty. Some of the common examples are banana, pineapple, etc. ठीक है जी. In the parthenocarpic process, I explained you that parthenocarpic is also artificially induced by the horticulturist for developing the seedless fruits. For example, seedless grapes, seedless oranges, seedless lemons, seedless tomatoes and watermelons. These processes are done for the commercial value of the fruits. Next is, what is the ripening of fruit? After the period of the growth, students, after the cell division और cell enlargement के बाद क्या होता है? The fruit undergoes some qualitative changes, that is known as the ripening of the fruits. ठीक है जी. तो वो कौन सी चेंजेस होती हैं? That denoted की जिनसे हमें ये पता चलता है कि fruit is now ripened. Number 1, softening of fruit flesh due to the enzymatic degradation of the cell wall as well as the cell contents. Secondly, हाइड्रोलाइटिक कन्वर्शन ऑफ स्टोरेज मटेरियल, जो उसमें स्टोरेज मटेरियल पड़ा है उसका सॉल्युबल शुगर्स में चेंज हो जाना, जैसे कि हमारा ग्रेप और एप्पल ये चेरी है जो वो स्वीट होते हैं. ठीक है जी. थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू कैरोटीनॉइड रिच क्रोमोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन वाला क्लोरोप्लास्ट है, उसका कलरफुल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाना, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाना, सो दैट दे मे गिव कलर टू द राइप फ्रूट. जैसे ऑरेंज कलर का है, एप्पल रेड कलर का है. ठीक है जी, इस तरह से. लास्ट इज कम्युलेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लेवर एंड द अरोमा ऑफ द राइप फ्रूट्स. स्टूडेंट्स, कुछ फ्रूट्स में क्या होता है? राइपनिंग है जो इट इज अकम्पेनिड बाय एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हार्मोन है इथाइलिन वो रिलीज होता है एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द राइपनिंग ऑफ सर्टन फ्रूट्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टॉपिक इज एपोमॉक्सिस. एपोमैक्सिस. स्टूडेंट्स, अ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, जो जहां पे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पे क्या होता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स दे चेंज इनटू हैप्लॉयड गैमेट्स बाय मियोसिस. पहले उनमें मियोसिस होती है और फिर वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाते हैं एंड देन फ्यूजन, उनकी फ्यूजन होती है हैप्लॉयड की बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देन दे फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है जी. दिस इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन और यू कैन से सिंगेमी. That diploid zygote develops into an embryo and the ovules are transformed into the seeds. ठीक है जी. But however, कुछ ऐसे plants होते हैं that have the ability to develop seeds without fertilization. ठीक है जी. तो क्या होता है इनमें? Thus, development of reproductive propagules without meiosis, development of vegetative propagules without meiosis is known as apomixis. जिनमें मियोसिस नहीं होता है, बिना मियोसिस के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बन जाते हैं, तो वो क्या होती है? एपोमिक्सिस. देयर आर जनरली टू काइंड ऑफ एपोमिक्सिस, एगैमोस्फेरी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एगैमोस्फेरी मीन्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स when the vegetative propagules form from root, stem and leaf and then growth of plant occurs. Students, agamospermy is further of 3 types. One is adventive embryony. This is known as adventive embryony. इसमें क्या होता है? एडवेंटिव में क्या होता है? द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड डायरेक्टली. जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स होते हैं जो ओव्यूल के, उन्हीं से ही डेवलप हो जाता है. जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं ओव्यूल के, डायरेक्टली उन्हीं से ही फॉर्म हो जाता है. दैट इज नोन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. फॉर एग्जाम्पल सिट्रस, वी कैन से इट अकर्स इन सिट्रस. सिट्रस मीन्स खट्टे प्लांट्स में ऐसा होता है. नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस.
you know very well. Formation of embryo from unfertilized egg. Formation of embryo from unfertilized egg, for example in banana. For example in banana. And last one is apospory. Apospory means the formation of embryo from any other cell of the embryo sac. एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से जो एम्ब्रियो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है जी. तो ये है हमारी एपोस्पोरी और वी कैन से एपोगेमी. इसको हम एपोगेमी भी बोल सकते हैं. एपोगेमी. ठीक है जी. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से तो उस टाइम एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो खुद एंडोस्पर्म बन जाता है. ठीक है जी. एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इफ डेवलप. अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उसमें एम्ब्रियोज की जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज इनसाइड द सीड एंड सच प्रोसेस इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली embryony. Polyembryony means the development of number of embryos in the embryo sac inside the seed. Number of embryos. बहुत सारे embryos का इकट्ठा ही बन जाना is known as polyembryony. Students, with this our chapter 2 sexual reproduction in flowering plants is completed. In the next session we will switch over to the next chapter that is known as the human reproduction. In that chapter we will study the reproductive systems of male and female humans. Thank you and have a nice day.